Now the most important part of the human body, that is eyes, हमारी आंखें, है ना? The most important part. Dr. Paul has given 14 points. 14 points around the eyes. I1, I2, I3, 4, 5, 6, 7, 8 to I14. So Dr. Paul has given I1 to I14. Now, each and every points in the I orbit, under the I orbit meridian. हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आई ऑर्बिट के अंदर हैं. I will show you one diagram here. So we can see this is the eye orbit. We can see the lots of bone. This is the zygomatic bone, maxilla bone, frontal bone, lacrimal bone. There are lots of bone around. Ethmoid bone. So lots of bone around together making the eye orbit. Okay. In the eye orbit, we have multiple bones like this bone, this bone, this bone, inner bone. Here is sphenoid bone. So this part becomes very, very important. ये part है ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. As per Dr. Bohl, we know the points on the corner of bone. So the point will be on this corner. So the point will be on this corner. यहाँ पर ऐसे points मिलेंगे on the corner. Yes, fine. So now generally in simple, if I draw the image, अगर मैं एक simple सी image draw कर दूं यहाँ पर, so this is the upper part of the eye, this is the lower part of the eye. We can divide from the central part. Okay. So there are multiple points will found. Like this, okay, all around the bone. Multiple points are here. यहाँ पर हमारे points इस तरह से फैले हुए हैं. So before proceeding ahead, let's see the meridian channels. So a urinary bladder meridian is passing from here. We can see the urinary bladder 1 and this is the urinary bladder 2. तो आंखों के अंदर से यूरिनरी ब्लडर मेरिडियन जाता है. If you press the inner part of the eyes here, you will get very good relaxation. You can press both together also. There our tear gland are there. हमारी आंसू बनाने वाली ग्रंथि पाई जाती है. Tear gland. That is the location of urinary bladder 1. Then UV2 will be on this corner of eyebrow, UV2. UV1, UV2 on the corner of eyebrow.
So the other 2 points as per TCM. Now if we see here, अगर हम lateral side में देखें, so as per TCM, we can see there is a 2 meridian on the lateral side, triple warmer and gallbladder meridian. So this is the triple warmer meridian at the level of eyebrow. That is a triple warmer meridian. This is the point of the triple warmer meridian. ये हमारे ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का पॉइंट है. ट्रिपल वार्मर 23 or Senjayo 23. Now if we look at down, that is a gallbladder 1. We can see here, ये हमारा gallbladder 1 point है. We can see here, this is at the corner of eyes. This is the eye. At the corner of eye, 1 point. This is the eyebrow. At the corner of eyebrow, 1 point. So upper point is triple warmer and the lower point is gallbladder as per TCM. We can see in the other image, we can see this is the gallbladder 1 at the corner of eye. Okay. And the triple warmer meridian point, that is triple warmer 23 at the level of eyebrow. तो हमें ये सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे so that we can draw more point around on the corner of eyes. That is the gallbladder 1 on the eye orbit. On the corner eyebrow, we have triple warmer 21. So triple warmer 21 and gallbladder 1. Gallbladder 1 at the level of eyes, triple warmer 23 at the level of eyebrow. Okay. Now as per TCM, this is the stomach meridian. Okay, Dr. Voll has done some changes in the numbering of this point. But as per the TCM, we know this is the stomach point, stomach meridian. We can see one image, we will understand. So this is the stomach meridian. Okay, we can see stomach 1 as per TCM. Dr. Voll has changed the nomenclature. डॉक्टर बोल ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है नंबरिंग में. ओके, ना इतना तो क्लियर है ना. ये तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था. अभी आगे हम बढ़ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? किसी ने हाथ उठाया था? ओके, हाँ रुचि जी. सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो पॉइंट्स हैं ये बोन के ऊपर है या थोड़ा सा अंदर है? यहाँ पे बोन के अंदर है, मतलब बोन के अगर ऊपर, ये बॉर्डर पर है, बॉर्डर पे. ये बॉर्डर पर है.
तो जैसे ट्रीटमेंट के लिए लगाएंगे, TW23 तो बोन के ऊपर लगेगा। एज पर डॉक्टर बोल लगेगा, TCM में हम ऊपर लगा देते हैं, लेकिन डॉक्टर बोल के अनुसार बोन के बॉर्डर पर जाएगा, सारे बोन पॉइंट के बॉर्डर पर जाएगा। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि हमने पहले भी देखा ना कि डॉक्टर बोल के जितने भी पॉइंट्स थे, whether you talk about here, most of the point we can see on the border of bone. Okay, so Dr. Bowl is following the border. That's why they are telling eye orbit meridian. What is eye orbit? The meaning of eye orbit, where eye is located. The cave where eye located. एक गुफा जिसमें आई है. So he is telling eye orbit meridian. He has given I1 to I14. There are 14 points, even few more points other than 14. So altogether there are many points, like 17, 18 points around the eyes. Now we will see the point of different part of the eyes. अब हम यहाँ सारे points देखेंगे. अब उसके लिए we have to understand the part of the eyes. अब हमें आंखों के part भी तो पता होना चाहिए. What is macula? What is ciliary body? है ना? So let's talk about little bit about the eyes, so that I can tell you, okay, this is the point of vitreous humor. You know what is vitreous humor? आपको पता तो होना चाहिए ना. Patient will come with the problem of glaucoma. What is glaucoma? है ना? You should know what is glaucoma. What is macular degeneration? What is myopia? What is hypermetropia? सुना है myopia? मेरा पिया. हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूसरे का पिया, है ना? वो सब अभी आएंगे इसमें. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, इन सबके ट्रीटमेंट आई ऑर्बिट मेरिडियन में है. The treatment of tear glands and everything. So let's talk about the little bit anatomy. Everything will come in the this. So quickly I will show you this image first. पहले हम आपको ये इमेज दिखाते हैं एक. ये देखिए. Look at this image. We can see all the points of the Dr. Bowl, how these points are located. I1, I2, I3, I4, 5, 6. In this way, I1 will be here. This is the I1. I1. और पूरा परिक्रमा लगा के I14 will be here. So I1 starting from inner side, making full circle and coming back, the I14. Okay. So now, so when we look at any object, जब भी हम कोई चीज देखते हैं, how we are able to see anything? हम चीजों को कैसे देख पाते हैं? So the light is coming from here. We can see the light is entering from the outer side, then going in the full length, and finally coming here on this spot. We can see this is the spot. Finally, light is coming on this spot. This is, if there is a problem in this spot, then person will not able to see. This problem is common with many diabetic persons. So when the light comes, light crosses many things. जब light enter करती है, so the first is this layer. It is like a, होती है ना पॉलिथीन. पॉलिथीन कैसी होती है? पतली वाली पॉलिथीन, आर पार दिखने वाली, है ना? और we can see very thin glass. You can see
both the side, transparent glass. Cornea is like that. Anything can, light can come and enter. Anatomically, three parts. The eyes are like a ball, a rounded ball. Okay. So there are three layers, outermost layer, then the middle layer, then the innermost layer. There are three layers in the eyes. The outermost layer is very tough and rough and little hard. That is called sclera. उसे हम कहते हैं स्क्लेरा. ये सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो टफ होती है, हार्ड होती है. Then the middle layer is having lots of blood vessels. Lots of blood vessels means it is very vascular. जो मिडिल की लेयर होती है बहुत ही vascular होती है with lots of blood vessels. Sometimes we see bleeding in the eyes because of this. This is called choroid. इसे हम क्या कहते हैं? Choroid कहते हैं. And the innermost layer, that is very important layer, and that is called retina. जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर, that is called retina. So mainly eye having three part. The outermost part is sclera, the middle part is choroid, and the inner part is retina. So now we can see the same thing in one image. Now we can see this is the outermost part. There is a sclera, outermost very tough layer, outer covering. ये बाहर की tough layer है. ये structural support provide करती है. It gives structural support. Okay. What is the benefit? इससे आंखों की जो मसल होती है ना वो जुड़ी रहती है. If you remember, we have seen many muscles. हमने ये आंखों की बहुत सारी मसल्स की बात की थी. द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, अपर रेक्टस, लोअर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, superior oblique muscle, inferior oblique muscle. We have talked about many muscles around the eyes. All the muscles having attachment with this sclera. इसका summary we can see here. So this is the eye. This white part is, okay, we can see here this is the sclera. And sclera having attachment of these all muscles, lateral rectus, medial rectus, superior rectus, all the muscle attached with the sclera. Yeah. Okay. So now let's come back to our previous image. So the outermost tough part of the eyes is sclera, this one. Now if you remove this, अगर हम इसे निकालते हैं, let's remove it. So the second part is called choroid, highly vascular, having highly
high blood supply, the choroid. Okay. If we remove this also, let's remove this also. Then this is retina, inner layer, having lots of nerve. इसमें बहुत नर्व होती है. And so we can see how this is the inner part. We can see it is like a ball. Now, if you remove this, then nothing. Then we can see nothing is left. Then only we can see these nerves and all. Okay. So in this way, we have seen the three layer of the eyes. हमने आंखों की 3 layers की बात की. Let's talk about again the outermost layer और sclera. चलिए हम फिर से हम sclera की बात करते हैं. This is, so we can see it's a fully rounded structure. We can see this is the right side, even the same the left side. Left side में भी होता है. This is white in color. ये इसका कलर कैसे होता है स्क्लेरा का? This is white in color. Sclera. White in color. The outermost part or the white in color. The outermost color. Okay. Now, if we look at the front part of the sclera, अगर हम इसके front part of the sclera की बात करें, यहाँ पर front part में it is absent. जो front part में ना, front part में this is the front part of the sclera. वहां पर ये समझो कि एक बॉल में एक छेद किया गया. So there is a one ball and you have made one hole and putting one very thin polythene so that we can see from outer to inner side. This thin layer is called cornea. इसे हम cornea कहते हैं. So what is cornea? So the meaning of cornea is, हम क्या समझ सकते हैं? What is cornea? कॉर्निया एक फ्रंट पार्ट है किसका? स्क्लेरा का. इट इज द फ्रंटल पार्ट ऑफ द स्क्लेरा. ओके. एंड in the cornea the light can go from one side to another side. It is a transparent. जो कॉर्निया की लेयर होती है ना, इट्स ट्रांसपेरेंट. वी कैन सी दिस इज अ थिन लेयर. वी कैन सी दिस इज द कॉर्निया. इफ यू लुक एट हियर, this is the cornea. चलिए एक क्वेश्चन है मेरा आपसे. आपने आई डोनेशन के बारे में सुना है? आई डोनेशन तो क्या होता है? पूरा आई ऑर्बिट निकाल के डाल देते हैं क्या? क्या डालते हैं? ओनली कॉर्निया, राइट? Only there is a transplant from, they're putting from one person to another person. Okay. तो आप लोग भी वो गवर्नमेंट का फॉर्म भरा जाता है ना, उसे भर सकते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपका कॉर्निया किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा. नहीं देना? हाँ. क्यों भाई? हमें भी कारण बता दो. हाँ ज्योति जी. सर वो मेटाफिजिकल एनर्जेटिक है अच्छा, मृत्यु के कि बाद? वो आपकी एनर्जी वहां पे रह जाती. और आप बहुत सारे ऐसे फिल्में भी बनी है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो उसको वो उस ऑर्गन में सेलुलर मेमोरी वो वही चीज कर रहा है.
बेसिकली इट डजेंट हेल्प एनर्जेटिकली देखें तो, ऐसे प्रैक्टिकली देखेंगे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम, हम्म। किसी को लाइफ दे रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना, लेकिन हर चीज का होता है फिजिकली कुछ है, एनर्जेटिकली अलग। सो अब ये सर मेटाफिजिक्स की बातें हम छोड़ Okay. सकते हैं। As per metaphysical, yeah. Got it. Now one question is this: कॉर्निया में ब्लड वेसल्स होती हैं क्या? Anyone? कॉर्निया. So cornea is fully avascular. कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होती. Okay. Cornea is the part, this front part of the eyes, where we can see black, the bigger black, not the center black, bigger black. एक काला काला भाग दिखता है ना आंखों के बीच में, ये पूरा आगे कॉर्निया है. इट्स ए वेस्कुलर पार्ट. इसकी इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती. ओके. या सो स्क्लेरा ऑल अराउंड इन द फ्रंट पार्ट, इट्स ए cornea. It's clear? And what is cornea? Cornea is the transparent layer. Light can pass from one side to another side through the cornea. We can compare the cornea with a very thin polythene cover or thin glass. जैसे ग्लास में से लाइट आ सकती है लेकिन हवा नहीं आ सकती, है ना? So that is the cornea. So sclera and cornea. Okay. The second layer, that is choroid. जो दूसरे लेयर है उसका नाम क्या है? Choroid. If we remove this cornea, let's remove this. The second layer is the middle layer. It's a very vascular layer. ये बहुत ही vascular होती है, इसमें बहुत हाई blood vessels पाई जाती हैं. And this is providing lots of nutrition in the eyes. Okay. And this is dark pigmented layer. इसका कलर थोड़ा सा dark होता है, we can see. And this is located just below the sclera. Sclera के नीचे just above the retina. Because of this only, retina is getting nutrition because this is highly vascular. इसके कारण ही इसके अंदर जो रेटिना है उसको खाना पीना मिलता है. ओके. So now this is dark in color because in the choroid there is one very important thing present, that is called melanin. इसके अंदर मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है. We know melanin. Melanin is pigment in our skin, making the skin black. So melanin नाम का पिगमेंट इसमें होता है. और melanin का काम क्या है? What is the work of melanin in choroid और eye? आपको पता है melanin का काम क्या होता है? Do you know what is the work of melanin? नहीं पता. जब हम when we are going in the sun rays, skin becoming black ना. So melanin means like an umbrella, protecting you from the sun rays. More you go in the sunlight, you will get more melanin pigmentation. Why? Because body want to protect you from the sunlight. तो melanin का काम क्या है? Prevent excessive entry of sunlight. That is the work of melanin. Got it? मेरा फेवरेट क्वेश्चन वैसे मैं पूछ रहा हूँ, विटामिन डी डेफिशिएंसी इज हैपनिंग इन विच पीपल मोर, साउथ अफ्रीका, नॉट ब्लैक पीपल और द वाइट पीपल? Who is more prone to vitamin D deficiency? Vitamin D deficiency. White people or black?
अच्छा चलो पहले जो व्हाइट वाले बताइए, एक एक करके, ओनली व्हाइट वाले पहले बोलेंगे। टेल मी योर आंसर, लॉजिक। अभी रुक जाइए अनिता जी, रुक जाइए। Why the white people as per you? Unmute and tell me. कोई लॉजिक होगा ना? Uh, there's no melanin. Melanin is रुको very अनिता जी, less. रुको रुको। आप व्हाइट वाले में है कि ब्लैक वाले में है? White. हाँ बोलिए बोलिए, व्हाइट वाले में तो। White में मेलानिन नहीं होता, कम होता है। तो हमारे ब्राउन में मेलानिन होता है। अफ्रीकन में अच्छा ये बताओ मेलानिन। कि व्हाइट वाले में मेलेनिन कम होता है ना? हाँ जी। तो खूब सनलाइट खूब अंदर जाएगी, फिर कोई रोकने वाला ही नहीं है। ब्लैक, Melanin gives a color also, sir. I told you there are two persons, one is white, one is black. I will tell you. The person who are black having more melanin, because of the too much melanin, they will absorb less sunlight. तो बेटा विटामिन डी डेफिशिएंसी किसमें होगी? इन द ब्लैक पीपल. Why? Their body is covered with the umbrella of melanin. Melanin के umbrella ने कवर किया है. तो जब entire body is covered by the melanin, how the sunlight will enter? It will enter on the other side. If you do comparison with the white people, sunlight will enter easily. Okay. उनको स्किन कैंसर ज्यादा हो जाते हैं, दे आर प्रोन टू स्किन कैंसर। कौन से लोग? गोरे लोग। गोरे लोग। वाइट, वाइट प्रोटेक्शन नहीं, अम्ब्रेला नहीं। अम्ब्रेला नहीं है ना? रेडिएशन इंजरीज भी स्किन में, वो स्किन बर्न्स वगैरह उनको जल्दी। तो सर मेलेनिन कुछ ही रेज को प्रिवेंट करती होगी, क्योंकि जो हम देखते हैं वो भी तो सनलाइट की वजह से, आई मीन लाइट की वजह से ही देखते हैं, वो लाइट रेज ही जा रही हैं। हाँ थोड़ा सा प्रिवेंट करेगा ना। कुछ ए यूवीए we are doing यूवीबी। comparison. हम्म। We are doing comparison, right? Okay, now in the same way, let's come back to the eyes. हम आंखों की बात करते हैं. So in the eyes, lights are going. So when the lights reaching on the retina पर पड़ के वो फैल सकती है ना लाइट, there might be, but the choroid there with the melanin, it will prevent if the light want to scattered in the eyeball. तो melanin अंदर रहेगा, and the choroid it will work like an umbrella. It will prevent like spreading of the light in eyeball, and it will make sure the light should reach fully on the retina. The image should be very very clear. The visual contrast should be very sharp. एकदम बढ़िया दिखना चाहिए, क्योंकि सब खेल लाइट का है भाई. लाइट के बिना नहीं दिखेगा. Okay. And not only this, choroid also preventing our eyes from UV rays because of melanin. Because as the UV rays are, because melanin is like a natural sunscreen. Melanin हमारी natural sunscreen की तरह होता है. It is absorbing the high harmful UV rays, ultraviolet rays. So retina की इंजरी को रोकता है. It reduces the risk of retinal injury. That's why retina is very sensitive with the light. बहुत ही sensitive है light के लिए. As the light reaching on the retina,
lots of reactions start happening in the retina. Okay. So retinal health, the blood supply to the retina, nutrition supply to the retina, food supply to the retina is done by choroid. Okay. Suppose there is too much heat in the retina. Suppose maybe there is too much heat in the retina. Suddenly we are looking very sun towards, we are looking toward the sun. Too much light will reach. कहते हैं ना भाई, सन को मत देखो, आंखें अंधा हो सकता है व्यक्ति. We can see light are so powerful. You are looking something, and just by looking something, the person might be blind. How it is possible? Because light will reach to the retina. If there is a too much light and there is a retinal overheating, retina will damage. इसलिए कहते हैं सूर्य ग्रहण को मत देखो, है ना? So first, as soon as there is overheating of the retina, जैसे ओवरहीटिंग ऑफ रेटिना होती है तो फिर क्या होता है, जो मेलेनिन होता है ना, इट ऑलवेज ट्राई टू डू द थर्मल रेगुलेशन, इट ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट द ओवरहीटिंग. यू नो देयर इज अ वन डिसीज, सूर्यमुखी एल्बिनिज्म, सुना है नाम? एक बीमारी होती है जिसका नाम है सूर्यमुखी और एल्बिनिज्म. यू कैन सी इन द गूगल, आई विल शो यू. Albinism. We can see the people look like this. When these people are going in the sunlight, जब भी लोग सनलाइट में जाते हैं तो क्या होता है, they are not able to see in the sunlight, they are very disturbed in the sunlight. इनको सनलाइट में बड़ी तकलीफ होती है. क्यों होती है? Why? Because albinism means वो बीमारी जिसमें मेलेनिन की कमी है. The disease having very less or no melanin. What will happen? There is a less melanin in the choroid also. So there is very less. तो ओवरहीटिंग से उनके पास प्रोटेक्शन करने वाला माध्यम नहीं है. So they will not able to see too much. They will be having too much difficulty in the sunlight also. Albinism. Melanin is very much important. Okay. तो मेलेनिन की कमी होने से, केवल मेलेनिन की प्रॉब्लम होने से केवल स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है, आंखों की प्रॉब्लम भी होती है. इज इट क्लियर? एंड मेलेनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर किसी को गोरा होना है, लेकिन आप देखिए, if we are having less melanin na, it's very dangerous. Okay. So we should have enough melanin. यानी काला होना भी भाग्यशाली होने की निशानी है. इसलिए कहते हैं कि दोषों की साम्यावस्था मीन सांवला रंग. गोरे रंग में दोष, doshas are not balanced in the very fair color. Doshas are balanced, vata pitta kapha are balanced in the body having सांवला रंग, है ना? Got it? As per Ayurveda. जो लोग सांवले लोग बड़े खुश हो रहे होंगे कि नीचे लग की, है ना? Okay, fine. Now the third layer is retina, अंदर वाली लेयर. नहीं, अभी हम मिडिल लेयर की बात कर रहे हैं. We are talking about the middle layer. Okay. Middle layer means choroid,
हम कॉरेड की बात करें, दिस इज द कॉरेड, हाईली वेस्कुलर. इन द कॉरेड वी हैव मेलेनिन, इसी के अंदर है हमारा मेलेनिन. नाउ if we come to the front side, see this is like a ball. If you come to the front side, ये देखिए ये मसल है, ये चारों तरफ देख रहे हो, ये मसल है. दिस इज कॉल्ड ciliary muscle. Ciliary muscle. Okay. Look at this ciliary muscle. So what is the work of ciliary muscle? Ciliary muscle का काम क्या है? Okay, let me remove cornea. Cornea को एक बार निकाल देते हैं. ये ciliary muscle है. आगे ciliary muscle है इसके. इसका काम क्या है? लेंस को थोड़ा सा शेप बदलना लेंस का. अभी इसके अंदर ही थोड़ा जाओगे तो लेंस भी मिल जाएगा. Changing the shape of lens, controlling the shape of lens. Suddenly we are going in the light, suddenly we are going in the dark. So changing the shape of lens is the work of ciliary muscles. Okay. So let's see this. So this is the choroid. This is the ciliary muscle. चलिए दोनों को निकाल देते हैं. I am removing the ciliary muscles. I am removing the choroid. अभी ciliary muscle को निकालने के बाद ये आ गया हमारा retina, the innermost part, that is retina. Okay. Now in the retina, we can see very important one part that is called phobia. ये देखो, ये जो रेटिना अंदर का, the light coming and reaching on this spot on the retina, कहीं से भी लाइट आई एक जगह पड़ेगी. The light's coming and reaching on one place, the central area. Okay, this is called the central area. This is called macula. इसे क्या बोलते हैं? macula. जहां पर लाइट जाती है. In the retina, in the central part of the retina, there is a one place जहां लाइट टकराती है. For example, I will give you an example. मैंने ताली बजाई, one hand is clapping on the other hand. ये कौन सी फोर्स थी? ये मस्कुलर फोर्स थी, मस्कुलोस्केलेटल फोर्स थी, एनर्जी थी. It was energy. Now suddenly sound energy appeared. The different type of energy appeared. Then you can listen this. Okay, energy can convert from one to another form. In the same way, light is coming in the eye. Suddenly it's going in the macula. तो लाइट बाहर से आई और मैकुला पर पड़ी. Okay, so what will happen in the macula? So the light is coming from outside, reaching here.
and it is converting in electric impulse. I will give one example. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. We are putting the, हम ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं. We are putting the solar panel. Light converting in electricity, right or not? In the same way, the light is going inside the retina. Either is solar plate. वहां पर solar panel लगा है. Retina. That is called macula. Immediately it will convert in the electric impulse. Okay. वहां से इलेक्ट्रिसिटी बन गई. That electric impulse will take the message to the brain. Then we will able to see the object. तो यहां पर जो मैकुला नाम की, so sometimes we see macular degeneration, means your solar panel ये जो खराब हो गया, macular degeneration. We will see the reports of the patient. Okay, fine. So I will show you the one last thing here. So this is the, we can see here, the very sensitive spot, macula. Okay. चलिए आगे की कहानी अब हम कल करेंगे. ठीक है जी, इतना ध्यान रखिएगा. फिर हम कल थोड़ा सा ग्लोकोमा एंड वेरियस टाइप ऑफ द आई डिसीज के बारे में हम बात करें. ठीक है, डन. एनी क्वेश्चन इस ज्योति जी? कल की छुट्टी है. सर बस एक रिक्वेस्ट थी, ये जैसे आईज के पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे नीडल लगा सकें तो मेरा डर तो निकल गया आपको लगाते देख देख के कि नीडल से, लेकिन वो कैसे लगाएं क्योंकि बहुत सारे आई के हैं जो हम करें. आई के पॉइंट दो जगह लगाना सीखेंगे, अच्छा, एक पर और एक हाथ में. तो सर नीडल भी बता दीजिएगा या कोई आपका वीडियो है क्या जो देख सकें? मुझे मैं तो नहीं आता कुछ भी. निडल निडल लगा के देखूंगा. लगा के देखूं, मंगा लूं? मैं निडल अपने लगा के देखूंगा खुद को. हाँ, पहले तो डर लगता था, आप लगाते हैं तो डर निकल गया आपको देख देख के, लेकिन वो भी. कोई बात नहीं है, आराम से लगाइए. वेरी सेफ पार्ट. अच्छा, आई और मेरिडियन इज फुल्ली सेफ. देयर इज नो एनी डेंजर. दोनों पेरेंट्स के, मैक्युला का, रेटिना का, डायबिटिक मैक्युलर एडिमा और वो लैमेलर होल, विट्रोमैक्युलर ट्रैक्शन और इतना सारी चीजें हैं. तो बहुत कुछ, ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए बता दिया था सर, बाकी हीलिंग से वो वापस ट्रांसपेरेंट कर ली. लेकिन अब कितनी मेहनत करें, एक्यूप्रेशर की मदद मिल जाए और ये नीडल लगा हाँ, सकूं तो. तो हाथ में भी सीखेंगे और आंखों में भी सीखेंगे, दोनों में. हाँ, तो नीडल भी बता दीजिएगा कैसे लगाते हैं. 100%, 100% थैंक श्योर. यू. ओके, रुचि जी, यस प्लीज. सर एक क्वेश्चन है. सर ये जो कॉर्निया होता है, दिस इज द होल आई और ओनली ऑन टॉप ऑफ द आइरिस? केवल आइरिस के ऊपर, केवल यहाँ आइरिस, उतना ही कॉर्निया होता है. और सारा जो ये वाइट है वो स्क्लेरा होगा? वो उसके ऊपर एक दूसरी लेयर चली जाती है, उसे कंजंक्टिवा बोलते हैं. वो हम बताए जैसे क्या ओके. होता है, दिस इज स्क्लेरा बट हम्म. स्टिल हैविंग वन लेयर, दैट इज कंजंक्टिवा. वो विल टॉक अबाउट दैट. ओके सर. बट द फ्रंट पार्ट ऑफ द आईज, दैट इज ट्रांसपेरेंट, दैट इज कॉर्निया. ओनली द आइरिस के ऊपर हाँ, वो जो है वो उसमें कॉर्निया. कहाँ तक है, कैसे क्या, आई विल टेल यू. ठीक है Because सर. there is a conjunctivitis, there is a disease. Okay, so we'll discuss for that also. ओके सर. Yes, Anju ji. आवाज नहीं आ रही है आपकी. सुब्रमण्यम जी. Sir, namaste, sir. हाँ, नमस्ते. Sir, I have a question. Like when you are speaking about eye donation and all, we take the only the transparent part. Am I audible, sir? Yeah.
Sir, if we are taking only the transparent part, and if the person to whom this eye is getting installed, if he is having some problem with the iris or some retina or macula problem or somewhere else, how is it going to get success? No, that will not work on that. Okay, It is only for cornea. okay. Oh, Other the than that, solution is only for the cornea. eye donation means just giving your cornea after a death to help someone. Too many people suffering with a corneal blindness. There are too many people. Karen, this is also the very big cause of the blindness. Okay, अभी हमें लग रहा है यार eyes is very big and we are just cornea. But even if we donate if anyone is getting the cornea now, even it might be very, very helpful for him. Okay. Yeah. Sir, I have a patient with CKD, and he also has glaucoma, and he's gone completely blind from both the eyes with optic nerve damage. So, will we be able to help him with? We have very good treatment of glaucoma. Mm. Patient told, I'm very busy. Okay, I will come. Nowadays, this time I'm going to be the AIMS doctor. And okay, let me, I'm going Mumbai, I'm going Coimbatore to meet this and that. And after 2 years, he came with a blindness. When the person is got blind, it's a very difficult to treat because there is a permanent damage of the retinal nerve fiber. तो ग्लोकोमा से जो नर्व डैमेज होगा उसको ठीक करना कठिन है अगर पूरा ब्लाइंड हो गया तो Okay, with retinal detachment. Glaucoma is very good in acupuncture. You please do the treatment of all. He's because the ophthalmologist has given up, saying that it's not possible, but he has hopes with acupuncture. He comes regularly, thinking at least some vision might return. One more question, sir. One of my friend he's having a macular degeneration since quite a long time. Can it be recovered? Yeah, definitely. Yes. We can work. Okay. I have two persons, sir, to whom I know very personally, to whom I want to make them normal. You can work. You have to install solar panel again properly. हो सकता है इन्वर्टर खराब हो गया हो, उसकी बैटरी कमजोर हो गई हो, उसको वापस ठीक करना है. आप सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा सर. धन्यवाद सर. Okay. Sumati ji, yes please. Sure, I would want to share one experience, like only by job primary correspondence. For a long patient belief that the patient will become okay. She could not open her eyelid for a very long time, sir, because of the heaviness. Only by putting green what we make green pyre, what is it called? The green piece. Yeah, that is mung. Green mung. By putting green mung, the patient has reversed the vision and able to lead a very normal life. There is another patient who has got retinal detachment maybe, has become blind. So I tried doing a lot of therapy for them also, but it did not happen, sir. They could not get back their vision. What is this I want to tell, sir, is along with the acupuncture, we also have to do cupping with the eye, palm, and a lot of eye exercises also need to be added. Yeah, right. Only with acupuncture alone it may not happen. Yeah, we can suggest eye exercises. Yeah, they have to do eye exercises. Yeah, we can suggest eye exercises. We can also do cupping. These things we can do. No problem. Yes, sir. Thank you, sir. Fine. Okay. Good night, everyone.